दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो जो है वो ट्रांसलेशन है। जो कुछ मैंने डॉक्टर जेफ बॉयल एजीटी के जो चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है, चीफ साइंस ऑफिसर है, उनके साथ मैंने जो इंटरव्यू किया था उसका अनुवाद कर रहा हूँ। तो अभी आप थोड़ी देर में इंग्लिश का पोर्शन देखोगे पहले, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको कि किसने क्या कहा। तो मैं इंग्लिश में उनको सवाल पूछता हूँ और वो इंग्लिश में जवाब देते हैं। तो मैं एक सवाल और एक जवाब होने दूंगा और उसके बाद मैं सवाल भी एक्सप्लेन करूंगा और जवाब भी एक्सप्लेन करूंगा। तो इस तरह से ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप स्किप कर सकते हैं जहाँ ज़रूरी पड़े वहाँ पर। तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश आता है और आपको एक्चुअल उसका जो स्टेटमेंट्स है या मीनिंग्स जो है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि कई बार अनुवाद करते वक्त कोई कोई भावनाएं और आइडियाज़ जो है, यानी कि आइडियाज़ यानी सोचने का तरीका जो है वो थोड़ा घूम जाता है, क्योंकि सही सही शब्द नहीं मिलते और अनुवाद करने में थोड़ी तकलीफ़ हो जाती है। उसकी वजह से आपको इंग्लिश भी देता हूँ और हिंदी भी देता हूँ। चलो इसके साथ हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। एजीटी के चीफ साइंस ऑफिसर डॉक्टर जेफ बॉयल के साथ। Hey all, welcome to Share Trek. This is Raj here. Friends, Dr. Jeff Boyle is the Chief Scientific Officer of American Gene Technologies. Jeff has over 25 years of experience in immunology, research, assay developments, and commercialization, and has held leadership positions at biopharmaceutical and diagnostic companies. Dr. Boyle has also maintained a long research career with over 30 publications and has received multiple high-level academic awards. He's an inventor listed on several patents in the field, including vaccines, immuno-oncology, and medical devices that have been launched as revenue-generating products globally. He has broad experience in responding to examiners, opposition proceedings, and has participated in the defense and prosecution of a variety of IP assets. He has also managed IP portfolios and executed on strategic initiatives to develop and in-license IP necessary for product development as well as market protection. The scope of Dr. Boyle's research and patent work includes diagnostics, utilizing the optimal stimulation of CD4 and CD8 T cells, and ability to differentiate and use simple analytical techniques, diagnostic utilizing the stimulation of both innate and adaptive immune responses to assess immune function, peptide epitopes for T-cell based diagnostics, antigen targeting to sites of immune induction, including DNA vaccines, and combination of biologics and immune stimulatory complexes for oncology therapies. I had the opportunity today to talk to Dr. Boyle about AGT103-T and get his insights. I hope you enjoy our interview with Dr. Boyle. Let's get started. Hey all, welcome to Share Trek. We have Dr. Jeff Boyle from American Gene Technologies with us today. We are fortunate to have some time from him, and we're going to ask the questions that you have been asking me. And welcome, Dr. Boyle. Yeah, thank you. Great to be here. Yeah, so we'll go into the set of questions that I had. The first thing is that we wanted to understand that AGT103-T is optimized to target HIV-1, which is the top priority because HIV-1 accounts for almost 95% of all infections. Are we looking at anything specific for HIV-2 at a later date? Well, I mean, HIV, getting HIV-1 done will be a pretty big accomplishment, and I mean, we're early in that process, and we also have a number of different approaches, sort of in the background that should we need to find further improvements to manufacturing, cost of goods, etc. So our focus will be pretty much on getting HIV-1 done and dusted, and then also our focus is very much on the US to begin with, and then Europe, but then there's a big world out there, and we'll have to see how applicable our approach is for the broader global community.
and what modifications may or may not be needed down the track. So that'll be our focus. It'll be, there's a lot to continue to do. So once we get that done and dusted, then obviously we can look to how do we expand it even further. And fortunately, HIV-1 is almost 95% of the infection. And Yeah. HIV-2 is very localized, I believe. So this is really optimum for the community. दोस्तों पहले मैंने थोड़ी लंबी बात की थी अकेले, वो था डॉक्टर जेफ बॉयल की जो क्वालिफिकेशंस है और उनका जो तजुर्बा है इस क्षेत्र में, उसके बारे में। तो डॉक्टर जेफ बॉयल को 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस में पूरे मेडिकल फील्ड में ही है, और उन्होंने कई कंपनी में सीनियर लेवल में काम किया है जहाँ पर उनके नाम पे पैटेंट्स भी है ऐसे चीज़ों के, मेडिसिन के और मेडिकल डिवाइसेस के जो मार्केट में बिक रहे हैं आज की तारीख में। और उनको CD4 और CD8 टी सेल एक्चुएशन और उसका रिस्पांस को ग्रेजुएट करने का बहुत तजुर्बा है। और उनका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ऑन्कोलॉजी में भी है, जो कैंसर ट्रीटमेंट है उस पर, तो ये सब जगह पर उन्होंने रिसर्च की है और उनको एकेडमिक यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती है वहाँ से भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और उनके पेपर्स हैं। तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर है और इन्होंने कई कंपनीज़ में जहाँ काम किए हैं वो कोर्ट में जो लड़ाई होती है पेटेंट के लिए, उसमें कई बार इन्होंने कंपनी को डिफेंड किया है, कंपनी की तरफ से गवाह दी है कि पैटेंट क्यों इस कंपनी के पास रहनी चाहिए, और कई बार कंपनी के अगेंस्ट भी गवाह दी है कि पैटेंट क्यों दूसरे कंपनी के पास नहीं रहनी चाहिए। तो इनके पास जो नॉलेज है वो अमेरिकन जीन टेक्नोलॉजी के लिए अभी ज़रूरी है, क्योंकि इनको लीगल और टेक्निकल दोनों नॉलेज है और इसकी वजह से ये बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं इस कंपनी में चीफ साइंस ऑफिसर की जो की तरह। और वो मैंने पहले इंट्रोड्यूस किया। फिर पहला क्वेश्चन मैंने उनको ये पूछा कि लोग कहते हैं कि AGT103-T जो है वो HIV-1 को ही एड्रेस करता है, क्या आपका कोई प्लान है HIV-2 के लिए, उसको कुछ करने के लिए आगे चलकर? तो जवाब में उन्होंने कहा कि राज, ये HIV-1 सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 95% दुनिया के लोगों को HIV-1 ही होती है और हमारा पहला टारगेट अमेरिका है, दूसरा टारगेट यूरोप है। तो ये सब जगह पर जो है सब HIV-1 ही है और HIV-2 जो है गिने चुने जगह पर है और उसके बारे में बाद में देखेंगे। पहले सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम HIV-1 को काबू कर लें, उसके बाद जो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा वो करेंगे HIV-2 के लिए। तो इस तरह से उन्होंने हमारे को पहले सवाल का जवाब दिया। अब जाते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर। The other question I had was that in our earlier interviews with Jeff, he had described how AGT103-T works. Now that we know that how it targets CCR5 and includes short interrupting RNA to interrupt viral RNA, can you please expand further if it's possible? Let's say you extract CD4 T cells from a patient. Some of it may be pristine and some of it infected. How do you handle them? Any extra information you can give will be very interesting to us. Yeah, sure. So maybe start at the beginning. So, our approach really comes down to the concept is that we take CD4 T cells, HIV-specific CD4 T cells, and then we sort of form a bulkhead of protected immune cells and allow those to then, once they're back reinfused into the body, to be the sort of the helpers that then are able to, provide the needed signals to help with really the mechanisms by which HIV is controlled, which are things like CD8 T cells, potentially antibody, although it's never really been shown to be that critical, but that said, it could very well play a role. So those CD4 T cells are the bastion from which the rest of it can adapt with the immune with the virus as an ongoing chronic viral infection. And so in terms of then how we go about doing that, when we start with the patient's own cells, they're infected, they're on drugs, they're well controlled. So they have very low to no virus detected, but there's a low level of ongoing viral replication that
that leads to a lot of the complications associated with HIV, the chronic inflammation, etc. But that's also gives an underlying immune response that's there. So we start with that. It's very, very small, and we take all the cells out, and the way that we target those is through what cells we activate. So we have some synthetic molecules that mimic HIV, and so we activate those cells with those synthetic peptides, and that then makes them susceptible. The activated cells makes them susceptible to infection with our lentiviral vector, and in that lentiviral vector is how we're trying to protect them. And we do that at two different levels. The first one is, so there'll be a population of these HIV cells that were not infected. And so we want to knock down CCR5. So that's going to be your main, protection from infection once you've pulled these people off drugs. And then as a backup, so should they already be infected, or that they get infected by a different mechanism, then we target two areas of the HIV genome. HIV is incredibly diverse, and it has a super high mutation rate, and so trying to find regions of HIV that are so it's called conservation, and the reason they're conserved is because they're coding for regions that HIV uses over and over again, and for multiple different proteins. So there's a lot of selection pressure on those regions to not change. So we target a couple of those, and then any RNA that's produced that contains those targets gets degraded through the silencing mechanisms. So that's the sort of the backup strategy, and we use two different ones so that there's again more pressure applied to stop these mutations from being able to escape. दोस्तों, तो फिर मैंने डॉक्टर जेफ बॉयल को ये बताया कि हम किस तरह से समझते हैं कि AGT103-T काम करती है, और मैंने पूछा कि जब आप पेशेंट का बॉडी में से CD4 T सेल निकालोगे, ब्लड निकालोगे, तो उसमें इन्फेक्टेड सेल्स भी हो गए, तो आप उसको कैसे सेपरेट करते हो, AGT103-T कैसे बनाते हो? तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि पेशेंट का सेल निकाला जाता है और उसमें ART में पेशेंट होगा, फिर भी उसका ब्लड में थोड़ा लो लेवल में वायरस होगा, तो ये हमारे को हम लोग उसका कुछ नहीं करते हैं। और उन्होंने कहा कि उनके पास एक सिंथेटिक मॉलिक्यूल है जिसे उस ब्लड में डालने से उसमें जो CD4 T सेल्स है वो उसको रेस्पॉन्ड करते हैं सिंथेटिक मॉलिक्यूल को, और जब वो सिंथेटिक मॉलिक्यूल को रेस्पॉन्ड करते हैं तब इनके पास एक लेंटीवायरल वेक्टर है। लेंटीवायरस जो होता है वो एक टाइप का वायरस होता है जिसमें जीन एडिटिंग का सब पेलोड डाल के शरीर में डालते हैं या सेल्स के अंदर डालते हैं। तो जब वो CD4 T सेल मॉलिक्यूल को रिएक्ट करता है तो वो उस लेंटीवायरस को दिखाई देता है और लेंटीवायरस उसको जाके इन्फेक्ट करता है। ये लेंटीवायरस जो है ये तो सिर्फ शेल होता है, लेकिन उसके अंदर इनका AGT103-T का प्रोग्रामिंग वाला न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह रहते हैं जो अंदर जाकर CCR5 को बंद कर देते हैं, तो यानी कि उस सेल में CCR5 नहीं रहेगा अभी। और उसके अलावा उसके अंदर कोई मॉलिक्यूल्स डालते हैं जिसको शॉर्ट इंटरप्टिंग RNA कहते हैं, जो अगर किसी भी तरह और कोई रास्ते से अगर HIV1 अंदर आ जाए तो उसका एक ख़ास पार्ट जो है HIV का जो बार बार नहीं बदलता उसको टारगेट करते हैं, ताकि वो HIV अगर अंदर भी घुस जाए तो उसका वो रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। रेप्लिकेशन नहीं होगा तो वो DNA में जाकर बसेगा नहीं और उसके वजह से CD4 T सेल इन्फेक्ट नहीं होगा। तो ये इस तरह से मुझे डॉक्टर ने समझाया। So to summarize, I think once you harvest the cells from the patients, you are separating out the ones which are not infected, doing a CCR5 suppression. And then you're also introducing mechanisms inside those cells so that if HIV were to get into the cell through some other mechanism like CXCR4 or something, then I think you're targeting the highly conserved areas
of HIV, which do not change because that's vital for replication and construction of the virus. Probably you're talking about the trimer or gag protein, something like that, which is highly conserved. And then because of that, the replication cannot happen inside, even if it somehow manages to sneak into the CD4 T cell. And this empowered T cell is then put back into the patient, and that will stay in the patient's body and mobilize CD8 and helper cells in order to continue the functional cure on the patient. Is that a reasonable understanding? Yeah, and yeah. So, and I think the big thing is that we don't actually separate out the infected versus uninfected. Okay. I mean, it's actually very difficult to do that because Okay. one of the challenges with HIV is that it's can be latent. So it's integrated and it's doing nothing. So there's nothing really to identify those cells at all, even if you wanted to. And then the other side to it is that we're targeting the HIV specific CD4 T cells via the stimulation with the GAG. We use GAG peptides, as you were right there, and that's a very highly conserved area that we use to activate those cells. So we know that there'll be a good bulkhead from which to provide an ongoing helper response. And then, so once we stimulate them, we then we get rid of all the non-CD4 cells by depletion. So we look at different cocktails of antibodies to get rid of the other cells. So we're really now focusing on the CD4 cells. Then we put our viral vector in there, protect them, and then there's an expansion period for about a week in which we then massively expand the numbers of these cells. So we try to get at least 1 billion of these cells, but it varies depending on patient to patient, what you're starting with and what you end up with. And I think that because you're putting the interrupting molecule inside, even though you do not differentiate between HIV and non-HIV infected cells, I think it will still have an inhibitionary effect on the replication of the embedded provirus in those CD4 T cells. So I think that's how it would work, I suppose. Yeah, exactly. So if they were infected and they tried to start to actively, make new viruses, the silencing mechanisms will delete that RNA. Right. And तो मैंने डॉक्टर बॉयल को दोबारा बताया कि उन्होंने जो मुझे बताया कि किस तरह से वो AGT103 बनाते हैं, उसका मैं दोबारा वर्णन किया और उनको पूछा कि आपने ये बताया नहीं कि आप HIV इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड सेल CD सेल दोनों आप लेते हो, तो क्या उनको सेपरेट नहीं करते आप? तो उन्होंने जवाब दिया कि राज, आपका पूरा जो एक्सप्लेन आपने किया कि हम किस तरह से AGT103 बनाते, वो सब बराबर है, लेकिन हम इन्फेक्टेड CD4 T सेल और अनइन्फेक्टेड CD4 T सेल दोनों में कोई उनको सेपरेट नहीं करते और उनको सेपरेट करना भी इम्पॉसिबल है, तो हम दोनों को यूज़ करते हैं. और उन्होंने कहा कि वो कि इस तरह से काम करता है कि ये जो CD4 T सेल जो ब्लड पहले पेशेंट से निकालते हैं और उसमें से CD4 T सेल्स जो है उनको मॉलिक्यूल से एक्टिवेट करते हैं. वो मॉलिक्यूल जो है वो उन्होंने बताया कि वो गैग प्रोटीन है, गैग प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, और गैग प्रोटीन का मॉलिक्यूल की वजह से CD4 T सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और वहाँ पर लेंटीवायरस जाकर वो CCR5 को CD4 T सेल के अंदर जाके CCR5 को बंद कर देता है और शॉर्ट इंटरप्टिंग RNA डाल देता है जो HIV का जो गैग प्रोटीन है उसको टारगेट करता है, तो उसको रेप्लिकेट होने नहीं देता. तो उसकी वजह से अगर CXCR4 इस्तेमाल करके HIV2 भी अंदर घुस जाए या HIV1 भी अंदर घुस जाए तो उसको वो मल्टीप्लाई होने नहीं देता. वो पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, मैंने बताया कि सर डॉक्टर, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपने जो HIV इन्फेक्टेड सेल है जिसके अंदर CCR5 बंद करके इंटरप्टिंग RNA डाला है, उसके वजह से उसके अंदर जो HIV वायरस है वो भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता. तो उन्हें बोला हाँ बराबर, वो ऐसा भी हो सकता है. तो ये दोनों मिला के जो CD4 T सेल्स है वो बॉडी के अंदर जाएंगे
और बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म तक रहेंगे। और उन्होंने कहा कि एक बार CD4 T सेल्स के अंदर सब मॉडिफिकेशन कर दिया तो फिर बाकी के ब्लड में जितने सेल्स रहते हैं वो सब को उन लोग निकाल देते हैं एंटीबॉडीज़ यूज़ करके, और सिर्फ CD4 सेल बचता है। फिर CD4 T सेल जिसको इन्होंने मॉडिफाई किया है उसको वो एम्पलीफाई करते हैं ताकि मिलियन बन जाए, और उसके बाद एक डोज बनता है इस AGT103-T का, जिसको पेशेंट के शरीर में डाला जाता है। और पेशेंट के शरीर में जाने के बाद इनमें से जो सेल्स है वो CD4 हेल्पर सेल्स और CD4 मेमोरी सेल्स बनाएंगे, और CD4 मेमोरी सेल्स जो है वो ज़िंदगी भर के लिए बॉडी में रहेंगे, और उसके वजह से आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बन जाएगा। तो ये बात बताया डॉक्टर जेफ बॉयल ने। तो अभी देखते हैं मेरा अगला सवाल। And how do these reinfused CD4, modified CD4 T cells manage to remain in the body for the longer term? Do they multiply by themselves, or what's the mechanisms involved in there? So it's similar to, you just think about like a typical chronic infection, of which people live with a lot of different chronic infections. You sort of then you set up really homeostatic mechanism between your immune system and the virus. So the virus produces antigens that, as it replicates, that stimulate the immune system. The immune system gets on top of it, suppresses the virus down, and it's just this ebb and flow then forever. And so you have a certain number of those cells. When they're activated, they become, what's called like effector cells. So those are the ones that go out and actually, suppress the virus. They stimulate CD8 T cells, which kill infected cells, and that drops the virus down. And so the cells, drop down. Some of those cells become memory cells, and those, live in the bone marrow, and at future dates when the virus comes back, some of those get reactivated, and then they become the next cells that generate the effector cells. So it's an ongoing self-renewal process. Okay. That's again requiring the virus to generate its own ongoing immune response. Right. So the memory cells do the magic to a good extent. Yeah. Yeah, they're your long-term reservoir of the next generation of cells. Got it. दोस्तों मेरा अगला सवाल था, मुझे और खुलासा चाहिए था कि किस तरह से एक बार AGT103-T दे दे तो ज़िंदगी भर के लिए फंक्शनल क्योर कैसे हो सकता है, वो CD4 T सेल कैसे ज़िंदा रहते इतने साल। तो डॉक्टर बॉयल ने कहा कि ये बहुत सिंपल है, बॉडी के अंदर होम्योस्टैसिस होता है। होम्योस्टैसिस मीन्स बैलेंस, एक चीज़ और दूसरे चीज़ का जो तनाव रहता है, तो कोई चीज़ ऊपर जाती तो दूसरा चीज़ नीचे आता, उस तरह से एक तरफ आप CD4 T सेल ले लो और एक तरफ आप HIV ले लो। जब HIV की मात्रा बढ़ेगी तो CD4 T सेल जो है बहुत सारे हेल्पर T सेल बनाएगा, एंटीजेंस और साइटोकाइन्स डाल के वो HIV वायरस को मारने के लिए। और जब वो मारने लगेगा तो HIV वायरस की संख्या कम होगी तो CD4 T सेल्स भी कम हो जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई मेमोरी T सेल्स जो है वो जाकर लिम्फ नोड या कई और जगह पर रह जाएंगे आगे के लिए यूज़ करने को। और जब CD4 T सेल की मात्रा कम हो जाएगी तो वायरस वापस बढ़ने लगेगा, तो वायरस बढ़ने लगा तो तुरंत CD4 भी हेल्पर T सेल्स वापस एक्टिव हो जाएंगे और वापस उस पर अटैक करेंगे। तो हमेशा इस तरह से फाइट चलता रहेगा HIV और CD4 T सेल्स के बीच में, और एक स्टैसिस लेवल रहेगा जहाँ पर एकदम लो लेवल में HIV वायरस रहेगा, और ज़िंदगी भर के लिए मेमोरी T सेल्स जो है उसको बार बार HIV का स्टिमुलस मिलते रहेगा। और अगर आपको एक HIV CD4 T सेल्स को समझ लीजिए एक कीटाणु ने जागृत किया, फिर उसके बाद वो कीटाणु शरीर से चला गया 5-6 साल के लिए, फिर बाद में आया तो तभी CD4 मेमोरी T सेल्स नहीं रहेंगे। लेकिन जो कि ये HIV शरीर के अंदर ही रहता है और बार बार आके मेमोरी T सेल को छेड़ता है, उसकी वजह से मेमोरी T सेल जो है ज़िंदगी भर के लिए आपके शरीर के अंदर रहेगी, और इस तरह से आपको लाइफ लॉन्ग फंक्शनल क्योर मिलता है, ऐसे डॉक्टर जेफ बॉयल ने एक्सप्लेन किया। And the other thing I had in mind was that I think it makes total sense to target HIV-1, given it accounts for 95% of the
infection. I think we touched upon these questions earlier before, but the only tweak I would do here is it possible for you to also shut off CXCR4 at a later date, or it's a more challenging target? So the main, if you look at, say, natural, natural resistance to HIV, CCR5 is a very, it's critical, and people that have mutations in it are naturally resistant, and most of the infection is really driven through CCR5. All HIV has the potential to switch to CXCR4, and mixed infections. It's more common in, say, untreated HIV, when this chronic infection, you start to see the rise of this alternative. So that is something that we don't anticipate is necessary in terms of the long term, but Right. But in the meantime, that's really why we have the backup of targeting HIV directly, just in case this Inside the does cell. require. Yeah. Exactly. Got it. That's a more elegant solution. तो अगला सवाल है, मैंने डॉक्टर को ये पूछा कि आप तो CCR5 को बंद कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर क्या आप CXCR4 को भी बंद कर सकते हैं, को रिसेप्टर को? तो डॉक्टर बॉयल ने कहा कि भाई CXCR4 को टच करने का कोई मतलब ही नहीं है हमारे हिसाब से, और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर HIV को ट्रीट ही नहीं करे, HIV-1 को ट्रीट ही नहीं करे कोई पेशेंट पे, तो उनके शरीर पे ज़बरदस्त HIV वायरस बढ़ता है, और जब ज़बरदस्त बढ़ता है HIV वायरस, तो वो जाकर कभी कभी CXCR4 इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो पेशेंट ART में रहते हैं, जिनका ट्रीटमेंट जारी रहती है, उनमें 99.9% तो किसी को CXCR4 इस्तेमाल करने वाला HIV-1 वायरस नहीं मिला है। तो वो कहते हैं कि हम तो CCR5 को मैनेज कर लेते हैं और उसी से सब पूरा काम हो जाएगा, और आगे चलकर अगर CXCR4 का इस्तेमाल करना पड़े तो तब का तब देखा जाएगा, लेकिन अभी मायने नहीं रखता, क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि 95% केस HIV के जो है वो HIV-1 ही है, और फुल 95% केस में अगर कोई मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट नहीं हो और कोई अनट्रीटेड नहीं हो, तो फिर उनको CXCR5 HIV इस्तेमाल नहीं करता उनके शरीर में। और उन्होंने कहा कि अभी तक जो बर्लिन पेशेंट, लंदन पेशेंट वगैरह जो है, सबका सिर्फ CXCR ब्लॉक किया था और HIV चली गई। तो उन्होंने कहा कि ये CXCR5 ही सबसे महत्वपूर्ण है, इसके अलावा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। Can you please provide us any updates on the progress of phase 1B or phase 2 trial, and when it will be started, if you have any information? Yeah, so I mean, we're really, right now we're working through, the spin out of the company. Our protocol is currently, we've submitted it to the FDA. So we'll see if there are any comments back from it. We have our sites selected, and so it'll just be a matter of getting through the AdImmune spin out and all of that associated activities, and then we'll be ready to go and then go as fast as we can. Yeah. And I suppose that you would like to have a statistically significant data available at the end of your next phase. So you might be having a lot more patients in the clinical trial? Yeah, so when we learned a lot from our phase 1 study. I mean, it was primarily a safety study, as they are, and then with the data that we were able to generate during the ATI, we learned a lot, but we didn't learn everything. And so our first protocol for the next study is really to understand at what point should we take people off their drugs relative to infusion,
And so, the first, three arms of the study are really to look at optimum timing around that. We saw something quite unexpected in the first study, and when we looked at the patients as they remained on drugs. We saw that our cells expanded after infusion. We really anticipated, these are well controlled patients on drugs, so we didn't expect there to be, much, HIV stimulating themselves once they Right. got reinfused, and yet they expanded. And so that peaked at around 2 weeks after infusion, and then they sort of did more what you would expect to see, absent them seeing virus, and start to fall away. So the next study will really be trying to understand how do we get the optimum response relative to that expansion, and when they see the virus, because you take them off drugs and it can take up to a month before that virus really rebounds in patients. So there's this timing element, and so that's our first real question. And so and we have both the cell therapy side to this and the gene therapy side. So looking at what impact do those cells have, the number, and what what impact does the immune response itself have. So we can look at other studies that have been done in the past, and where they've just taken people off drugs and multiple times, and look at what you would expect in terms of seeing control. So we have them powered enough to tell us that we're likely, if we get above a certain proportion of people that are able to control virus below that long-term non-progressive level, out for a period of about 3 or 4 months, that we're seeing something, that we're really confident that this is something different. And so we have those groups powered enough to show us, if each of us, we have 3 groups with different timings, and so we can tell, with a good degree of confidence that we're seeing something different. And then, once we see that, then that's really where we then, we take that data, go back to the FDA and say, hey, we think we're seeing something here. We think this is our best timing for infusion versus taking people withdrawing their drugs. And we really want to now, agree on what is it that you would accept as long-term efficacy, durable efficacy, and expand the groups once we get that data. And obviously, no more safety Yeah. concerns arise. तो फिर डॉक्टर जेफ बॉयल को मैंने पूछा कि हमें थोड़ी कन्फ्यूजन है कि आप फ़ेज़ 1 भी करने वाले हो कि फ़ेज़ 2 करने वाले हो, क्या आप बहुत सारे पेशेंट्स के साथ करने वाले हो, कब शुरू होगा? तो डॉक्टर जेफ बॉयल ने समझाया कि देखिए, इसमें ऐसा है कि हमने जो पिछला टेस्ट किया था उसमें कम लोग थे, उसके पहले भी हमने टेस्ट किए हैं तरह तरह के, लेकिन हमें अभी ये जानना है कि एटीआई कब शुरू करना चाहिए? इन्फ्यूजन देते ही शुरू करना चाहिए कि इन्फ्यूजन दे के 1 हफ्ते के बाद शुरू करना चाहिए, कि किस वक्त एटीआई शुरू करने से मैक्सिमम रिजल्ट आता है, ताकि पेशेंट को ज़िंदगी भर CD4 मेमोरी टी सेल रहे, और वो बैलेंस जो होना चाहिए है वायरस और AGT103-T के बीच में, वो बैलेंस सही तरह से कब आएगा? तो उसके लिए उनको पहले छोटी स्टडी करनी है, 3 ग्रुप पेशेंट्स रखकर वो उनको अलग अलग टाइम पे निकालेंगे। और अभी तक ऑलरेडी उन्होंने जो पिछले बार भी जो एटीआई वगैरह किया उसका भी डेटा है, वो सब सामने रखकर देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि किस वक्त निकालना है। फिर वो ऑलरेडी उन्होंने फ़ेज़ 2 का प्लान दे दिया है FDA को, तो फिर ये डेटा ले जाएंगे फिर FDA के पास, और FDA को बताएंगे, देखिए हम अगर टेस्ट करेंगे तो इस तरह से रिज़ल्ट आ सकता है, क्या ये आपके लिए काफ़ी है अप्रूवल के लिए? वरना इससे ज़्यादा और आपको कुछ चाहिए तो हमें बताइए, ताकि हम उसकी भी तैयारी कर लें, फिर फ़ेज़ 2 में हम चले जाएं। तो ये थोड़ा सोच समझ के ये करना चाहते हैं। तो इस तरह से मुझे डॉक्टर जेफ बॉयल ने समझाया। तो सवाल ये है कि ये अभी जो एटीआई रिमूव कब करना चाहिए, उसका जो स्टडी कर रहे हैं,
वो क्या शुरू हो चुका है कि कब शुरू होने वाला है। तो मैं अगले इंटरव्यू में उनको ये सवाल पूछूंगा जब उनसे अगली बार बात करूंगा। लेकिन अब की बार इंटरव्यू जो है उसमें जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मेरे दिमाग में वो सवाल नहीं आया, क्योंकि ये जवाब जो है ये मुझे पता नहीं था कि इस तरह से मुझे डॉक्टर जेफ बॉयल के पास से जवाब मिलेगा। और मैंने सोचा कि अगर मैं अपना दिमाग लगाकर क्वेश्चन पूछने लगूं तो बाकी जो क्वेश्चन मैंने तैयार कर रखे हैं वो वहीं के वहीं रह जाएंगे, और न जाने मैं किस सवाल के बाद और कौन सा सवाल पूछूंगा। तो मैंने सोचा कि जो मैंने प्लान किया है वही सवाल लेके जाऊं। तो अगले बार जब मैं उनको कांटेक्ट करूंगा तब मैं पता लगाऊंगा कि ये हो गया है कि नहीं। मैं ईमेल से भी पता लगा सकता हूं, तो वो मैं बाद में करूंगा। अभी चलते मेरा अगला सवाल। Can you I hope you please don't. describe the process of administering AGT103-T to patients? I believe it's an autologous process. Would you have designated collection centers, just like what these gene therapy companies are doing for sickle cell disease and TDT? Sure. Yeah. Yeah. I mean, the beauty of what we're doing is that, we don't have to reinvent the wheel here. There's, the steps that we're using to make this product are well established. And because of the nature of the product, because we're using what would be closer to what a natural immune response is looking like, we don't anticipate a lot of the issues that you see when you're trying to sort of get around the normal immune mechanisms, like where Right. you're trying to take the brakes off the immune response. Those are the areas where you're really starting to run into much higher risks of things like cytokine release syndrome, where these cells are sort of get out of control. So everything that we're doing on the patient side can be done in an outpatient setting, which is tremendous. Right. So they don't have to be hospitalized like a lot of the other procedures. We don't need to do ablation or reduce Okay. their bone marrow and such. So Right. we're really just using some differentiated CD4 T cells. So on that side, from the patient side, they can do it in an outpatient setting. From a manufacturing side, we still need to get those cells because we don't want them to lose their function. From the point from you take them out of the patient's body, you really want to get them into the manufacturing process as quickly as possible. So they'll still need to be, as close to the manufacturing site as you can make it, so that you don't run into logistical issues of shipping. And then it's a 12-day process to do the manufacturing, and then the cells are frozen, and then it really takes from the point that they're frozen, it really gives us time to QC test them, and that's really to make sure that there was no issues with contamination of the product, and it's they're sterile, and there's nothing dangerous that's been introduced during the process, and then there's some aspects to do with gene therapy, making sure that we haven't introduced a new replication competent virus into the patients that could be a danger. That's really what takes the longest period of time to test that. And so on average, it takes about 3 months by the time you send these things out to specialist labs for testing to get the results back. And then you've got to, make sure that the patient's fine and schedule them back to come back to get these frozen cells shipped to the site and reinfused. And, so that's currently the process. And so there's a lot of labor in that, it's all about scalability. As you bring these up, you can automate more, you get more value out of your facility and the people that you're hiring. So the notion would be to really try to keep these things as centralized as you can, so that you can make the most out of your capacity build. Yeah, that sounds like a logical approach. You want to put a balance between proximity to the patient as well as centralizing the manufacturing, find an optimum balance wherever possible.
to keep your break-even costs low so that it can be value for the patient as well as profitable for the company to go further. So that sounds great. So I think everything looks great, and all the ShareTrek community is rooting for AGT103-T to succeed. They're anxiously waiting for phase 2 to start and to get some data and other things. तो अगला सवाल मैंने डॉक्टर जेफ बॉयल को ये पूछा कि आप AGT103-T पेशेंट को किस तरह से देते हो, कितना टाइम लगता है, क्या आप उसके लिए स्पेशल सेंटर्स बनाओगे, जैसे सिकल सेल डिसीज़ के लिए बनाया गया है कि कलेक्शन सेंटर्स होते हैं जहाँ पर वो कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्शन सेंटर के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है जहाँ पर वो सब मैन्युफैक्चर करते हैं जीन थेरेपी, और फिर वापस वो सेल को पेशेंट के बॉडी में डालते हैं। तो डॉक्टर बॉयल ने कहा कि नहीं राज, ये सब हमारे को कोई इसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो मेथड है वो इंडस्ट्री में काफ़ी बार आजमा चुका है और स्टैंडर्ड प्रोसेस है, और हमारे थेरेपी के लिए बोन मैरो एब्लेशन की ज़रूरत नहीं, बोन मैरो को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं, बोन मैरो को हार्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो सिर्फ CD4 T सेल ब्लड सेल में से ही निकाल के कर लेते हैं। और हमारा जो प्रोसीजर है उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनका प्रोसीजर में CD4 T सेल लेकर उसको मॉडिफाई करने के लिए 15 दिन का टाइम लगता है। उसके बाद बाकी के सेल सब निकाल देने हैं और उस CD4 T सेल्स को मिलियन की तादाद में बनानी है, तो उसके लिए और थोड़ा टाइम लगता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जब हम इस तरह से जो प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं और एंटीबॉडीज़ यूज़ करते हैं, लेंटिवायरस यूज़ करते हैं, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे को क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान कोई वायरस उसमें घुस जाए और पेशेंट को वायरस परेशान करे। तो इसलिए उसको बाहर की लेबॉरेटरी में टेस्ट करने को भेजना पड़ता है, और वो टेस्ट के लिए 3 महीने के जितने लग जाते हैं, और उसके बाद पेशेंट के अंदर डाला जाता है, और पेशेंट को आउट पेशेंट की तरह से ट्रीट किया जा सकता है। एक बार ब्लड निकालना पड़ता है, दूसरी बार इंजेक्शन देनी पड़ती है और बात ख़त्म। तो इसके लिए हमें अलग अलग सेंटर बनाने की ज़रूरत नहीं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग पूरा एक सेंट्रल लोकेशन में होना चाहिए, ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग सस्ता रख सकते हैं। तो अगर सेंट्रल लोकेशन में रहेगा तो हम उसका ऑटोमेशन कर सकते हैं, और जितने स्टाफ है उनका पूरा उपयोग कर सकते हैं। अगर 10 सेंटर बना है तो 10 जगह पर मशीन डालनी पड़ेगी, 10 जगह में स्टाफ लगाना पड़ेगा, और जो है खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। हमको खर्चा भी कम रखना है, ट्रीटमेंट का भाव भी कम रखना है, इसलिए हम ऐसा कोशिश करने वाले हैं कि एक सेंट्रल लोकेशन में पूरा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो जाए, और वहाँ से सभी जगह पर इन्फ्यूशंस के लिए भेजा जाएगा। तो ये जवाब दिया था डॉक्टर जेफ बॉयल में। अभी देखिए हमारा अगला सवाल। कैन यू जस्ट ब्रीफली गिव अस एन आइडिया ऑफ हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द फेज 2 विल बी, like just a rough timeline to manage the expectations? Yeah, so we're looking at probably a couple of years. Really is a realistic time frame for how long it would take to finish the next study. And then I said it really depends on how our goal is to expand at least one of these groups into be a much larger group, and then it really comes down to recruiting. I think the good thing about the HIV is that there's a lot of highly motivated individuals out there that are willing to really commit to what these clinical trials require, which is a lot of visits, a lot of blood donations. So it's a huge ask on the patients, but that's usually one of the things that's time will be the time constraints on how quickly you can get these done is how many people out there are willing to sacrifice what's required in order to further these things along and get the data that we need. फिर डॉक्टर जेफ बॉयल को मैंने सीधे पूछा कि आप मुझे एक हाई लेवल टाइमलाइन दे दीजिए कि फ़ेज़ 2 कब ख़त्म होगा। तो उन्होंने समझाया कि राज, ये जो HIV के लिए टेस्टिंग है ये काफ़ी कठिन है,
तो जैसे उन्होंने पहले बताया था कि पहले हमें देखना है कि छोटे मात्रा में लोगों को लेकर देखना है कि एटीआई कब निकालना चाहिए इन्फ्यूजन के बाद, इमीडिएटली निकालना है कि 15 दिन के बाद निकालना है कि क्या। क्योंकि अगर वो हम छोटे मात्रा में देख लें तो हम जो बड़ा ट्रायल करना चाहते हैं उसमें हमारे को बहुत फ़ायदा होगा, ताकि हम लोग वहाँ पर बराबर डोसेज के ऊपर देख सकते हैं और कब निकालना चाहिए उसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर वो हमें अभी पता नहीं रहेगा तो फेल होने का चांस ज़्यादा है। तो वो उनका पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है कि 2 साल के अंदर, यानी कि अभी से लेके 2 साल के अंदर उनको फेज़ 2 ख़त्म कर देना है। ये उनका प्लान है। तो किसी भी तरह से देखो तो 2027 के पहले इसका रिज़ल्ट आने की संभावना है। उन्होंने समझा है कि ये तो सिर्फ हमारे ऊपर नहीं है बल्कि पेशेंट्स के ऊपर भी है जो वॉलंटियर करते हैं। वो बोलते हैं कि वॉलंटियर जो करते हैं वो खून बार बार देना पड़ता है उनको, और पूरा 2 साल जब वो ट्रीटमेंट ये जो प्रोजेक्ट चलते रहेगी तब उनको जब भी हम बुलाएं आना पड़ेगा, ब्लड देना पड़ेगा, डोज लेना पड़ेगा, जो भी है। और साथ ही साथ उसमें रिस्क भी है पेशेंट को। वो सब जोखिम उठाकर जो वॉलंटियर करते हैं उनके उनके लिए हम लोग बहुत थैंक्स कहते हैं, लेकिन उनको बहुत तकलीफ़ होती है। उनके ऊपर भी निर्भर है कि अगर हम समझ लीजिए 100 लोगों के साथ शुरू करें और बाकी एंड होने तक खाली 50 बचे तो प्रोजेक्ट में तकलीफ़ हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन हमारी उम्मीद है कि 2 साल के अंदर हम फेज़ 2 ख़त्म कर देंगे। और पहले जो स्टडी किया है उससे उनको एजीटी पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, AGT103-T पे थोड़ा कॉन्फिडेंस है, अच्छा कॉन्फिडेंस है। तो ये उन्होंने बताया। तो अभी देखते हैं मेरा अगला सवाल। Our community of viewers with HIV come not only from the US but from across the world, and especially the ones in the US. They would be, some of them would be definitely happy to volunteer, because I keep on getting some questions. I tell them you have to go to AGT's website and register, and then they will contact you. Is that the way it will continue to work, given that AdImmune has been created? Yeah, so I mean, we'll be hands off on these studies. So but I think down the track, once our sites are open and recruiting, these things are all there's clinicaltrials.gov and our sites, which are independent, will be will be the best place for these people to really contact. But we'll make all of that very as public as we can. Thanks a lot, Dr. Jeff Boyle, and it's been a wonderful conversation with you. And I hope our audience has got most of the things that they were looking for. And we hope to see you again, and we wish you the very best in your endeavors. Yep, terrific. No, it's happy to talk. Well, friends, that was an interesting and refreshing chat I had with Dr. Boyle. I hope you guys got most of your frequently asked questions answered about AGT103-T. I guess that given the state of flux that the company is in, with AdImmune coming into place and transferring the assets from American Gene Technologies to AdImmune, it's not always possible to give too much details given the dynamic nature of the business and research. We will get more and more information as time goes by and in subsequent interviews with AGT. And I'm sure that as and when they have more information to release, they will get in touch with us. So please let me know your thoughts and questions in the comments below. I'll accumulate them for the next time we meet with AGT. Thanks and have a great day. Bye for now. फिर मैंने उन्हें एक और सवाल पूछा जो हमारे सब्सक्राइबर्स कई बार पूछते हैं, सर मेरे को वॉलंटियर बनना है क्लिनिकल ट्रायल में, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने उनको पूछा कि आपका वेबसाइट में जाकर लोग क्लिनिकल ट्रायल के लिए वॉलंटियर बन सकते हैं क्या। तो उन्होंने कहा कि नहीं राज, अभी ये जो है AdImmune के पास चला जाएगा तो हम लोग का हाथ उस पर नहीं रहेगा, हम लोग इसको AdImmune पे ट्रांसफ़र कर देंगे तो वहाँ की टीम सब काम करेगी। तो clinicaltrials.gov और AdImmune को कांटेक्ट करना पड़ेगा वॉलंटियर बनने के लिए। तो ये हमारे को उन्होंने समझाया। फिर उसके बाद मैं जो लंबा बात किया इंग्लिश में, वो तो सिर्फ इंग्लिश ऑडियंस को मैंने उसका सारांश बताया, पूरे इंटरव्यू का सारांश बताया कि इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहली बात यह है कि इनको पहला चीज़ ये करना है
ये बताना है कि जो ये AGT103-T बनाते हैं उसमें जो CD4 सेल पेशेंट के पास से लेते हैं, उसमें वो ये फ़र्क नहीं देखते कि इन्फेक्टेड है कि इन्फेक्टेड नहीं है। इनको सब CD4 टी सेल्स चलते हैं और उसको एक स्पेशल मॉलिक्यूल एक्सपोज करते हैं, और वो स्पेशल मॉलिक्यूल एक्सपोज करने के बाद वो CD4 टी सेल जो है वो एक सिग्नल देता है, जिसकी वजह से इनके पास जो लेंटी वायरस है जिसके अंदर CD4 टी सेल को मॉडिफाई करने का इंस्ट्रक्शन है, वो CD4 टी सेल के अंदर चला जाता है और उसका CCR5 को बंद कर देता है और अंदर स्पेशल मॉलिक्यूल डाल देता है जो HIV का रेप्लिकेशन को बंद कर सकता है। तो इस तरह से जो CD4 टी सेल है जो एकदम इन्फेक्टेड है, उसमें भी जो HIV वायरस है वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, और जो साबुत CD4 टी सेल है जिसमें इन्फेक्शन नहीं है, वो हमेशा के लिए प्रोटेक्ट हो जाती है। और ये सब जब इंसान के शरीर में डालने के पहले वो उसको अच्छी तरह से टेस्ट करते हैं ताकि कोई और वायरस ना आ जाए शरीर में। तो पूरा क्वालिटी कंट्रोल सब करने के लिए इनको 15 दिन लगते हैं वो CD4 टी सेल को मॉडिफाई करने के लिए और उसको मिलियन की तादाद में बनाने के लिए। उसके बाद उसमें से बाकी के सेल्स निकाल कर उसको क्वालिटी कंट्रोल चेक करने के लिए दूसरे कंपनी के पास भेजते हैं, डायग्नोस्टिक्स के पास, और वहाँ पर 3 महीने का टाइम लगता है अप्रॉक्सीमेटली, और उसके बाद पेशेंट के अंदर डाल दिया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से 4 महीने का साइकिल है ब्लड निकालने से लेकर AGT103 पेशेंट के बॉडी के अंदर जाने तक 4 मंथ्स का साइकिल है। और ये कहते हैं कि हम सेंट्रल लोकेशन में पूरा बनाना चाहते हैं ताकि खर्चा कम हो और ट्रीटमेंट का भाव कम हो। और तीसरी बात यह है, इसमें आउट पेशेंट की तरह से ट्रीट किया जा सकता है, यानी कि आप हॉस्पिटल में जाओगे, आपका ब्लड निकालेगा, घर भेज देंगे, और 4 महीने के बाद आप वापस आओगे, आपको AGT103 का इंजेक्शन दिया जाएगा, आप घर चले जाओगे। हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं, रहने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। और तीसरी बात यह है कि ये जो थेरेपी है होम्योस्टेसिस पे चलती है। इसका मतलब है, हम जानते हैं कि CD4 मेमोरी टी सेल्स जो है वो शरीर में तब तक रहते हैं जब तक उनको एंटीजन, उनका जो एंटीजन रहता है खास, वो ब्लड में शामिल रहता है। और जो कि HIV जो है हमेशा के लिए ब्लड में रहता है, यानी कि अपने CD4 टी सेल के अंदर रहता है और वायरस छोड़ते रहता है। तो ART बंद करने के बाद वायरस तो आते रहेंगी, और वायरस को लड़ने के लिए CD4 मेमोरी टी सेल्स हमेशा उनके पीछे पड़े रहेंगे। तो उन्होंने बताया कि अगर CD4 टी सेल की मात्रा बढ़ जाएगी तो वायरस बहुत नीचे हो जाएगा, वायरस बहुत नीचे हो गया तो CD4 टी सेल की मात्रा कम होगी, वायरस की मात्रा बढ़ने लगेगी तो तुरंत CD4 टी सेल की मात्रा बढ़ेगी। तो इस तरह से ये होम्योस्टेसिस कहते हैं, इस तरह से वो मिनिमम लेवल में रखेगा। तो ये उन्होंने बताया। फिर मैंने उनको पूछा कि आपका क्लिनिकल ट्रायल का कितना टाइम लगेगा, फ़ेज़ 2 कब शुरू होगा। तो उन्होंने बताया कि अभी सबसे पहले चीज़ हमें यह देखना है कि कौन सा टाइम एकदम उत्तम है ATI करने के लिए। AGT103-T देते ही तुरंत ATI करना चाहिए कि 10 दिन के बाद कि 1 महीने के बाद, वो स्टडी हमें करना है। हमारे पास पिछला भी रिज़ल्ट है ATI का, तब हमने काफ़ी देर से किया था। अभी हमें तुरंत करना है और 1 हफ्ता 1 महीने के बाद ऐसे कर कर डेटा इकट्ठा करना है, ताकि जो फ़ेज़ 2 का क्लिनिकल ट्रायल हम करेंगे तब हमें बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा सबसे बेस्ट टाइम कब है ATI शुरू करने का। और वो बोले कि हमने सब प्लान दे दिया है FDA के पास, और जल्दी से जल्दी हमें यह पता लगाना है कि ATI कब निकालना है। 3 ग्रुप बनाया है पेशेंट्स का, छोटे छोटे ग्रुप्स, और उनके ऊपर स्टडी चल रही है, और उसके हिसाब से वो FDA के साथ बात करेंगे फ़ेज़ 2 शुरू करने के पहले कि आपने हमारा प्लान अप्रूव कर दिया है, हम ATI ये टाइम पे करेंगे। छोटे ग्रुप में हमने जो टेस्ट किया है उसमें ये सब इन्फॉर्मेशन आया है, क्या ये काफ़ी है आपको अप्रूवल देने के लिए, अगर फ़ेज़ 2 में हम यही साबित कर दे रिज़ल्ट। और अगर FDA बोलेगा कि नहीं और थोड़ी चीज़ें चाहिए, तो वो उसका भी अध्ययन करेंगे, और उसको इंक्लूड करके जब वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर फ़ेज़ 2 शुरू करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि फ़ेज़ 2 शुरू होके ख़त्म होने तक अभी से लेकर 2 साल का अवधि उन लोग सोचते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने बताया, देखो हमारा प्लान है 2 साल के अंदर ख़त्म करना, लेकिन जो पेशेंट आएंगे हमारे पास वॉलंटियर, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती है और उनको बहुत परेशानी का झेलना पड़ता है। एक तो रिस्क रहता है क्लिनिकल ट्रायल का, और दूसरा बार बार उनको जब भी हम बुलाए तो ब्लड देना पड़ेगा, और जब बोले तब ATI करना पड़ेगा, ये सब चीज़ करना पड़ेगा। तो अगर हम 100 पेशेंट के साथ शुरू हो जाए और आखिरी में 2 साल के अंत में सिर्फ 25 पेशेंट बचे, तो फिर मज़ा नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ें हमारे को ध्यान में रखना पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 साल के अंदर करें। FDA को भारी भरकम डेटा चाहिए,
और उसके हिसाब से हम लोग फुल कोशिश करेंगे और 2 साल के अंदर करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि 2027 के पहले आ जाना चाहिए इसका फ़ेज़ 2 का रिज़ल्ट, और इसका अप्रूवल भी 2027 के आसपास आना चाहिए। तो इस तरह से मैं सोच रहा हूँ दोस्तों। ये सारांश है पूरे इंटरव्यू का। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा, और आगे चलकर एजीटी हमें दोबारा इंटरव्यू देगी, और ये एजीटी के जगह पर अगले बार जो इंटरव्यू होगी शायद एड इम्यून के चीफ साइंटिफिक ऑफिसर के साथ होगी, क्योंकि फ़िलहाल डॉक्टर जेफ बॉयल ने कहा कि वो बहुत व्यस्त है उनके दोनों के टीम के AGT103T में से पूरा इन्फॉर्मेशन AGT103-T का और उसके सब डॉक्यूमेंट सब एड इम्यून को देना है, और वहाँ के टीम को पूरा बताना है कि FDA के साथ फ़ेज़ 1 में क्या क्या हुआ और क्या इन्फॉर्मेशन है, सब नॉलेज ट्रांसफ़र करना है। वो सब काम जारी है, और IPO भी आएगा उसका, उसके लिए भी काम चालू है। तो ये सब चीज़ें साथ में चल रही है। तो दोस्तों ये है सारांश पूरे इंटरव्यू का। तो इसके साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। देखिए आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर दबाना, क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम अगर ये और भी लोगों को बताए तो चैनल में ज़्यादा लोग देखने लगेंगे, उनको फ़ायदा होगा। और इसके साथ ही वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।